Welcome back to my channel. This is a mobile repairing course. This course beneficially for your mobile repairing. Firstly, insulator. The material does not allow current to flow through them. Use called insulator. They now have any power supply. Example: rubber, wood, plastic. जैसे भी सामग्री उनके माध्यम से प्रभावित होने की अनुमति नहीं देती, जिसे इंसुलेटर कहा जाता है। उनके पास कोई बिजली की आपूर्ति नहीं होती है, जैसे रबड़, लकड़ी, प्लास्टिक। इंसुलेटर को कुछ डायग्राम की सहायता से समझते हैं। दिस इज अ डायग्राम फॉर अ इंसुलेटर. दिस इंसुलेटर एंड मेटल प्लेट्स and this middle side in capacitor. The insulator, second diagram is open electrical circuit. In this side is open insulator and one bulb and battery connector. What is a conductor? The material allows currents to flow through them are called conductor. They flow of electrons. Example: मेटल, आयरन, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर। हिंदी में, सामग्री अपने माध्यम से धारा प्रभावित करने की अनुमति देती है, कंडक्टर कहलाती है। वे इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह करते हैं। एग्जाम्पल: धातु, लोहा, सोना, तांबा, चांदी। सेकंड डायग्राम ऑफ अ कंडक्टर. कंडक्टर इज इन दिस कॉपर साइड and conductor seed and insulation and jacket. 5 electrical conductors: silver, gold, copper, steel, sea, water. 5 electrical conductor. What is a AC/DC? DC is a direct current, have store, have polarity. AC is alternating current, no store, no polarity. DC डायरेक्ट करंट, स्टोर करे, ध्रुवीयता है। AC प्रत्यावर्ती धारा, कोई स्टोर नहीं, कोई ध्रुवीयता नहीं। In this diagram show direct current and alternating current. Direct current flow in one direction and alternating current flow in both direction. Polarity. Example: diode, transistor, MOSFET, IC, LDO, low dropout. Non-polarity. No polarity: resistor, capacitor, coil, on polarized capacitor. ध्रुवीयता: डायोड, ट्रांजिस्टर, MOSFET, IC, LDO. गैर ध्रुवीयता: कोई ध्रुवता नहीं, रोकने वाला संधारित्र कुंडल, गैर ध्रुवीकृत संधारित्र। SMD, surface mount device. Resistor, the symbol of a resistor, and black body silver line, 2-pin resistor. Or some of resistor don't show any value and some of resistor show some value, and this is a 5-pin resistor and a 4-pin resistor. Capacitor. And this type of capacitor in this diagram. Diode, one side anode and cathode. Anode side is positive, cathode side is negative. This is shown in a diode diagram. Transistor, base collector emitter is transistor. Two type of transistor: NPN, PNP. NPN negative positive negative, positive negative positive. A sum of 4 transistor image show. MOSFET.
in this diagram, these are a MOSFET. Crystal. This is a crystal. LDO. Low dropout. LDO. LDO is input voltage, output voltage, enable, and one side is ground. IC. Integrated circuit. LDO. Low dropout. Input voltage, output voltage, enable, and ground. And working of a LDO. In a IC get in a input voltage, then that side is the output voltage, in between in a capacitor, and enable in one side, and ground in this arrow side is GND ground, and enable signal get a CPU and बीच में रजिस्टर. जब LDO CPU में इनपुट आता है तो LDO को सिग्नल के तरीके के लिए 1.8 वोल्टेज सक्षम हो जाता है. फिर LDO आउटपुट के लिए आवश्यक वोल्टेज प्रदान करता है. जब LDO सक्रिय होता है, CPU LDO को एक आवश्यक आउटपुट भेजने के लिए सिग्नल भेजता है. When input come in LDO, CPU get enable 1.8 volt to signal back to LDO. Then LDO provides required voltage to output. When LDO is activated, CPU sends signal to LDO to send a required output. Mobile section. Power section, camera section, CPU section, SPK, UBK section, mic section, network section, fingerprint, other sensor section, touch display light section, Bluetooth, Wi-Fi, hotspot section, ROM, RAM, eMMC, eMMCP section, charging section, SIM memory card section, headphone jack section, power V positive, V negative button section, flashlight section. Next topic is resistor. Resistor is an electronic component which opposes flow of electric current or electronic component which is resist them. They resist or highly electron moving slowly from resistor and then they flow them. रजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक घटक है जो विद्युत प्रवाह या इलेक्ट्रॉनिक घटक के प्रवाह को रोकता है, जो उनका विरोध करता है. वे प्रतिरोधक से धीमी गति से चलने वाले या अत्यधिक इलेक्ट्रॉन का विरोध करते हैं और फिर उन्हें प्रभावित करते हैं. रजिस्टर. So in this diagram resistor, this is a 2-pin resistor. Yeah, black body, silver line. Some of show any value and some of show without value. Symbol of a resistor. This is a unit is ohms. Thermistor. Two type of a thermistor resistor, PTC and TC. Positive temperature coefficient, negative temperature coefficient. This diagram of a PTC thermistor. LVR, low value ohms resistance. Check mode beep. Check LVR 0 to 50 ohms and beep and some value. LVR का मूल्य ओम्स और प्रतिरोधक चेक मोड, उसको बीप मोड में चेक करते हैं LVR को. LVR के 0 से 50 के बीच की वैल्यू है और
बीप आनी चाहिए और समान वैल्यू होना चाहिए, तो LVR रजिस्टर इज ओके। HVR, high value ohms resistance, check in ohms, not in beep, check HVR above 50 ohms। HVR उच्च मूल्य ohms प्रतिरोधक कितना होना चाहिए, चेक इन बीपी में नहीं है। यदि बीप नहीं आती है तो HVR रजिस्टर ओके है और इसकी जो ओम्स वैल्यू है वो 50 से ऊपर होनी चाहिए। अब नेक्स्ट इज VDR। VDR वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। This so is a VDR diagram. TVS diode work. This diode stop to human body electromagnetic current frequency, any type of current go to circuit board or mobile। कार्य, ये डायोड मानव शरीर को विद्युत चुंबकीय धारा की आवृत्ति को रोकते हैं। किसी भी प्रकार की धारा सर्किट बोर्ड या मोबाइल पर जाते हैं, यानी कि कोई भी अपने जो मानव शरीर की जो भी सर्किट धारा है वो उस पर जाने के लिए रोकते हैं। ये TVS diode mainly found in mobile touch screen section and power button and volume positive negative section। मुख्य रूप से मोबाइल के टच स्क्रीन सेक्शन और पावर बटन और वॉल्यूम सेक्शन में पाया जाता है। इफ डायोड स्टॉप ह्यूमन बॉडी वोल्टेज मैग्नेटिक फील्ड फ्रीक्वेंसी टू गोइंग इन एनी सर्किट बोर्ड और मोबाइल डिवाइस। यदि डायोड किसी भी सर्किट बोर्ड या मोबाइल डिवाइस में जाने के लिए मानव शरीर वोल्टेज चुंबकीय क्षेत्र आवृत्ति को रोकता है। दिस इज डायग्राम फॉर अ डायोड इज unidirectional and bidirectional। Diode checking method। In this diagram show a diode checking method। Condition in checking method: pass and fail. Pass. In this diagram show is anode is a positive side and cathode is a negative side, showing any value or a reading. This is diode is okay, or fail side not showing any value or reading fail। Second, D positive and negative and negative and positive not showing reading value and not showing reading value and it's fail। रेक्टिफायर डायोड डिस्टकारी डायोड वर्क होता है, कन्वर्ट करते हैं AC टू DC करंट ओनली। फाउंड इन डिस्प्ले बैकलाइट सेक्शन। कार्य, AC को केवल DC करंट में बदले में मिला, डिस्प्ले बैकलाइट सेक्शन में मिला। कॉइल यूज और सिग्नल फिल्ट्रेशन। High frequency, low frequency passing or coils are used in Bluetooth, Wi-Fi, GPS network section and current variation voltage boost. Also this type of work does do coil। कॉइल का उपयोग या सिग्नल फिल्टराइजेशन, उच्च आवृत्ति कम आवृत्ति पासिंग कॉइल, ब्लूटूथ वाईफाई, GPS नेटवर्क सेक्शन और करंट वेरिएशन वोल्टेज में उपयोग होते हैं। इस प्रकार के काम भी कॉइल करते हैं। A passive electronic component that store energy in the form of a magnetic field are called coil। एक निष्क्रिय इलेक्ट्रॉनिक घटक जो चुंबकीय क्षेत्र से ऊर्जा का भंडारण करता है कॉइल कहलाता है। This all of coil show in this diagram, and this type of diagram you show in PCB board। Signal filterization. First is a total response. In this diagram is a frequency more of so
and a high pass filter. In this type of high pass filter and low pass filter, they in this type of, so and then it's called as a low off filter. High frequency, low frequency pass, low frequency pass in this diagram, and high frequency. Current variation, one side is current and voltage, non-line region and negative resistance region. Voltage boost, on state is boost is voltage, and off state in this type of diagram. Type of coil, buck coil and boost coil. buck coil भी हम रेड लाइन्स वोल्टेज के लिए सीपीयू पर टिके रहते हैं. बक कॉइल पास पावर आईसी में पाए जाते हैं. Buck coil also V for exclusive voltage to large to on CPU or buck coil are found in near power IC. In this coil create speed is too fast. Boost coil also used for amplify or grow to current or boost coil are found in charging display बैकलाइट ग्राफिक सेक्शन नियर बाय. बूस्ट कॉइल का उपयोग वर्तमान में बढ़ने के लिए भी किया जाता है. बूस्ट कॉइल के पास में डिस्प्ले बैकलाइट ग्राफिक सेक्शन को चार्ज करने में पाए जाते हैं. दिस इज अ डायग्राम फॉर अ बक कॉइल एंड अ बूस्ट कॉइल. बक कॉइल, इन दिस कॉइल क्रिएट स्पीड इज टू फास्ट. और बूस्ट कॉइल इंक्रीज करेंट. यानी कि बक कॉइल का यूज क्रिएट करना है स्पीड को फास्ट, और इंक्रीज करता है बूस्ट कॉइल करेंट को. कलर फाउंड, चूंकि मोबाइल पीसीबी में ब्लैक टाइप का कलर प्रयोग होता है और PCBs में मल्टी कलर टाइप का कॉइल पाया जाता है. As black type of color use found in mobile PCBs and multicolor type of coil are found in PCBs. Checking coils. Pass. Also check in beep mode. Coil continuously beeping, it's okay. Fail. Also check in beep mode. Coil are not beeping, it's fail. In gap of beeping time, it's also fail. All of details show in this. Transistor. Work of amplification, switching, regulating, oscillator, modulation, demodulation. The show of amplification in this diagram: coil tower, cell tower, and outside antenna, and cellular signal booster, and distributed antennas. Thus, capture in mobile. This is the amplification. What is the switching? In this type of switching used in a mobile and any PCB board. Regulating win sections, input volt, in this volt, and in a middle side is diode, and oscillator. In this type of diagram, in oscillator available. Schematic symbol: base collector, emitter. In this diagram, so in a schematic symbol: base collector, emitter, NPN, PNP. चेकिंग मेथड, चेकिंग विधि: यदि आधार पर एक प्रोब लेते हैं और एमिटर वैल्यू में 2 प्रोब दिखाते हैं और कलेक्टर वैल्यू को दिखाने पर बेस अन्य पर एक प्रोब लेते हैं तो यह ठीक है.
If take one probe on base and two probe in emitter, value showing, and tap a first probe on base, other on collector value showing, then it's okay. एमीटर के पास कलेक्ट्रेट की तुलना में अधिक मूल्य है। द्वितीय एमीटर पर एक प्रोप्ले और एमीटर पर वन प्रोप्ले और आधार पर प्रोप्ले और कलेक्टर पर दूसरा मूल्य न दिखाए, यह ठीक स्थिति नहीं है। Emitter has a more value compare than collector. Take one probe on base, other on emitter showing not value, and take one probe on base and another on collector showing not value. It is not okay condition. Pass and fail. Pass. Check in diode mode. If you check drain to get if have not value and drain to source have value or reading, it's okay. Fail. Check in diode mode. If you check drain to get and drain to source they have not showing any value, hence they are fail. Second, if have one side value, it is okay. Second, if have do not showing any side value, then it is damage. MOSFET केवल एक साइड वैल्यू दिखा रहा है। यदि रजिस्टर में है तो इसे पुल डाउन रजिस्टर कहते हैं। ये होता है प्रैक्टिकल में है तो, पार्सलर में है तो। एक तरफ वोल्टेज और एक तरफ सिग्नल में फिर पुल अप रजिस्टर कहा जाता है। MOSFET showing an only one side value. If register is in parceller, then it's called pull down register. In outside voltage and on side signal, then called pull up register. श्रृंखला। जब सर्किट नहीं चल रहा होता है तो हमें श्रृंखला संयोजन में कॉइल और रजिस्टर मिला और LVR में कोई भी रोकने वाला हम जंपर करते हैं। सीरीज। We found coils or resistor in series combination when circuit is not running and any resistor in LVR. We do jumper. Second, श्रृंखला संयोजन में हम कितने कनेक्शन, एक या एक से अधिक कनेक्शन दे सकते हैं। हम इन श्रृंखलाओं पर किसी भी घटक को हटा देते हैं या किसी भी घटक में शॉर्ट सर्किट होता है जो I2C में नहीं चल सकता और प्रोटोकॉल लाइन में हम वहां जंपर नहीं कर सकते हैं। फिर से सेकंड इन सीरीज में, how many continuation can we give one connection or more than one in series combination? We remove any component on this series or any component have short circuit can't run in I2C and protocol line, we cannot jumper their line. थर्ड, यदि एक घटक छोटा है या वहां से हटा दिया गया है तो सर्किट नहीं चलेगा। थर्ड इन सीरीज, इफ वन कंपोनेंट हैव शॉर्ट और रिमूव फ्रॉम देयर स्पेस द सर्किट विल नॉट रन। पार्ट लेट, हमें कैपेसिटर और डायोड समांतर संयोजन मिला है। यदि इन संयोजनों में किसी भी कमी से उस घटक को जंपर परिवर्तन नहीं मिलता है। पार्टलेट, we found capacitor and diodes partlet combination. If any short in this combination don't get a jumper, change the component. Parallel, if in a parallel if in parallel continuation have any short the cell circuit, so series first, the same amount of current flow through all the components.
parallel. First, the current flowing through each component combines to form the current flow through the source series. Second, in an electronic circuit, components are arranged in a line. Second, in parallel. In an electronic circuit, components are arranged parallel to each other. Third, if one component breaks down, the whole circuit is burnt out of or off. Third, if one component breaks down, other components will function. Each component has its own independent circuit. This diagram for a series circuit, and this is a diagram for a parallel circuit. Parallel circuit up and down in so सीरीज। श्रृंखला सभी घटकों में समान मात्रा में धारा प्रवाहित होती है और पैरेलल में प्रत्येक घटक से बहने वाली धारा आपस में मिलकर स्रोत से होकर प्रवाहित होती है। सेकंड, एक विद्युत परिपथ में घटक एक पंक्ति में व्यवस्थित होते हैं। सेकंड, एक विद्युत परिपथ में घटक एक दूसरे के समांतर व्यवस्थित होते हैं। थर्ड, यदि एक घटक टूट जाता है तो वेल सर्किट बाहर या बंद हो जाता है। थर्ड, यदि एक घटक अन्य घटकों को तोड़ता है तो प्रत्येक घटक का अपना स्वतंत्र सर्किट होता है। What is a cold test and hot test? Cold test, check without battery, without charge. In multimeter, diode mode, BIP mode, ohms mode and farad mode. Hot test, check with battery with a charger, power on condition in multimeter DC mode. Check in diode mode, reverse bias. In this method, so you are easily checking in a diode mode. Red is ground, black TD point, jack components, forward bias, red TP point and component jack, reading value G ground and reading value N ground. OL, open line, offline. Mean have short, showing and showing its leakage. This is a series of a diode mode. This is a diagram for in this type of diode, and one side is reading value and one side is a reading value. And hence in diode mode component, showing this proprietor they have a series connection. You saw in parallel diode mode, one side is reading value and one side is 00 is ground. Hence in diode mode components showing this non-pair ties, they have in parallel connection. Okay, diode mode. Diode mode is one side is reading value and one side is reading value. And okay, and one side is reading value and one side is ground. Then this diode is okay. Short में diode में one side is 0 and second side is 0. Then in this diode is short. Showing these properties, hence they have short components. OL, डायोड मोड में चेक करें यदि घटक दोनों पक्षों को दिखा रहा है। OL हाँ तो उनके पास खुली लाइन है। OL, check in diode mode if components showing both side OL hence they have open line. रिसाव यानी कि लीकेज, डायोड मोड में चेक करें इसलिए घटक सटीक रीडिंग है और मोटर में वे 400, 300, 200 और 600, 700 दिखाते हैं, इसलिए उसमें रिसाव होता है। लीकेज, check in diode mode, hence the component exact reading in 500 and is matter
They show 400 and 300 and 200 and 600 and 700, hence they have leakage. Diode mode checking. Series reading value and a reading value. Parallel reading value is a 0 and one side is 0. Pass condition is one side is value and one side is 0. This is a pass condition. Short condition is one side 0 and second side is 0. This is a short condition. Leakage condition, accept value. Leakage condition, accept value 540 one side and one side is 0. And showing 600, 700, 200, 150 and 300 and 400 and one side is 0. OL यानी open condition, OK condition, reading value and reading value, and OL is OL. Power key on off section. A direct battery to connect power IC in the middle side, so in any register, and both are capacitor is input in this circuit. Only charging 1.8 to 3.3 volt without power on, without battery. केवल बैटरी 1.8 से 3.3 वोल्ट बिना पावर के अच्छी गुणवत्ता वाले मल्टीमीटर में वे फॉरवर्ड बायोस OLSO में दिखाते हैं। वोल्टेज डायोड मोड के साथ ओके मोड चेकिंग। पहले जैक या सेवा की जांच करें या यदि बदले तो ओनली बैटरी 1.8 to 3.3 volt without power on in good quality multimeter they show in forward BIOS OLSO. OK mode checking with cold test diode mode. First check jack or service if or change if. Short check in 4 3 and 6 to 1 or to 1 multimeter showing 0 then it's short. चिप 4 3 6 से एक में चेक करें मल्टीमीटर 0 दिखा रहा है तो यहाँ शॉर्ट है नहीं इसमें शॉर्ट है। लीकेज if leakage how to repair check 4 3 6 first check to confirm leakage and to confirm leakage in reverse BIOS 600 in under showing below 600 then leakage is confirmed। रिसाव अगर लीकेज चेक की मरम्मत कैसे करें यानी कि रिसाव की पुष्टि करने के लिए पहले जांच करें कि रिसाव की पुष्टि करने के लिए रिवर्स बायोस में 600 to 600 के नीचे दिखाने पर रिसाव की पुष्टि होती है। ओपन OL चेक इन। फर्स्ट चेक रजिस्टर लाइन पावर IC। पहली जांच रोकने वाला रेखा या पावर IC। सिम सेक्शन pin name sim VCC function 5 volt and 3.3 volt DC VDC power supply input। sim reset signal used to reset in card COM। sim clock provides clock signal into COM timing is rewired। sim data input or output for serial data। sim VDD 21 first for external programming and purpose NC। sim VVS is ground। VVS supply connected to ground। VSIM sim voltage from power। second reset CPU connected line। data CPU connected line। clock CPU connected line।
NC not connected, GND ground, SIM defection, CPU connected. केवल श्रृंखला में समांतर प्रतिरोधक छोटा होता है जिसे पुल डाउन रजिस्टर कहा जाता है. Only parallel in series register is short are called pull down register. Unside reading और unside ground वे pull down register कहलाते हैं. One side reading and one side ground they called pull down register. This is a SIM section. SIM section. In this diagram, SIM section is a SIM tray. In this SIM tray is a input is a ground and VSIM and ANSI and reset and data and clock. जो power IC controlled by a VSIM and CPU control SIM defection pin and reset and clock and data. Touch section. Battery outline VBAT DC to say OC charging IC BQPI outline जिसे सैमसंग में VPH इन कॉडलूम और VSYS कहा जाता है. इसमें पावर IC आउटलाइन VRE गिव चार्जिंग आउटलाइन V चार्ज और VCS VBVS. Battery outline VBAT DC to OC charging IC BQPMI outline called VPH in column and VIAS in Samsung. Power IC outline VRAY charging outline charge VCH VBVS. This is a touch section. In this diagram, control a touch section, more of option control and get input feedback and output feedback. Then is a CPU and PMIC and DCT. The touch section of a diagram. VRAGE TP I2C SCL is second. TP I2C SDA is third. TP INTN is 4. TP RSTN 5 and 6 number is a ground. Okay, in this diagram touch section is 6 number is a ground. First, VRAGE is connected in a PMIC. First is VRAGE is connected in this VRAGE is connected in PMIC. And second, SCL SDA interface RST is connected to CPU. Or 6 number are ground. All of detail write on this. And one side voltage, one side signals, they called a pull-up register. And this diagram show in this pull-up register as a CPU is a single line is a 1.8 volt. Is in this middle side is capacitor or resistor and a PMIC. Any section connection I2C SOD oblique SCL. One side voltage or one side ground called a pull up down register.
PMIC and any section. Power IC lines V raise, charging IC out, VPH, VSYS, battery section V bus, VCH, V charge. This is a charging section. This V charge is a battery. This is a charging regulator circuit. And CSNS, this is a battery and driver PMIC. Control all of section. CPU. As right now all of things. Power IC outlines VRAGE, charging IC outline VPH and VSYS, battery section out VBAT, from charging section charge VCH and VBS. पावर आईसी आउटलाइन वीरेज, आईसी आउटलाइनों को चार्ज करना VPH और VSYS, बैटरी सेक्शन आउट VV80, चार्जिंग सेक्शन से V चार्ज VCH V बस. All of detail right now. Any charging IC input is 5 volt called DC to DC IC BQ BMI. कोई भी चार्जिंग आईसी इनपुट 5वीं है 5 वोल्ट है जिसे डीसी से डीसी आईसीयू बीक्यू बीएमआई कहा जाता है. इन एनी मोबाइल सो हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर, देन चेक इट्स थर्मल रजिस्टर. इफ लो टेम्परेचर प्रॉब्लम देन चेक सबबोर्ड रजिस्टर. In schematic charge they showing under 0.60 ampere, then its charge IC problem. किसी भी मोबाइल में हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर हो तो उसे थर्मल रजिस्टर को चेक करें. अगर लो टेम्परेचर की समस्या है तो सब बोर्ड रजिस्टर को चेक करें. योजनाबद्ध चार्जर में वे 0.6 डिग्री एम्पियर के नीचे दिखा रहे हो तो यहाँ आईसी समस्या चार्ज कर रहा है. boot capacitor nearby charging IC. If boot capacitor showing both side 4 volt, then it's charging. We bet. If boot capacitor showing one side 4 volt and one side 8 volt, then charging IC is okay. IC चार्ज करने के पास बूट कैपेसिटर, यदि बूस्ट कैपेसिटर दोनों पक्षों को 4 वोल्ट दिखा रहा है तो चार्ज हो रहा है. अगर बूस्ट कैपेसिटर एक तरफ 4 वोल्ट और एक तरफ 8 वोल्ट दिखा रहा है तो IC चार्ज करना ठीक है. In this diagram show charging regulator circuit and OVP, dry power IC and CPU. And in this diagram all of detail right now. OVP, over voltage protection, DRV, drivers, और CSNS, current sensors register. BATSENS, battery sensor. BSI, battery signal inductor. DC to DC charging IC, BQ BMI. OVP, voltage संरक्षण से अधिक. सेकंड DRV, चालक. थर्ड CSNS, वर्तमान सेंसर प्रतिरोधी. BATSNS, बैटरी सेंसर. BSI, बैटरी सिग्नल संकेतक. DC से DC चार्जिंग IC, BQ BMI. SIM section. And this diagram show in a SIM section. In the control CPU data clock and in this tray control CPU and reset and power IC control vSIM to battery connector. As in the middle side is input is a register, and if you require and capacitor then you will put the capacitor. vSIM to power IC, reset to CPU clock, CPU
data to CPU. NC not connected. NC means is not connected. GND means is ground. SAM detection is to CPU. They all of detail right now in this diagram. Backlight section. In this diagram so is a backlight section. The work is a backlight section in this diagram. Power IC, DC to DC, win section, and switching in this side. First, for feedback signal, comp, GND, switching, control and voltage. प्रतिक्रिया संकेत के लिए comp, GND, switch in and नियंत्रण voltage in. All of details हो this diagram. अगर एक कैथोड लाइन नहीं चल रही है तो हम आधा डिस्प्ले दिखाते हैं. जैक में कैथोड 18 to 19 की दो लाइनें हैं. वीबैट चार्जिंग आईसी को देता है, फिर डीसी को डीसी बैकलाइट आईसी को 4.2 या 16 देता है, और रेक्टिफायर डायोड नीचे 3 वोल्ट बनाता है जो डिस्प्ले जैक को 16 पिन देता है. If one cathode line is not running, then we saw half display. There are 2 lines of cathode 18 to 19 in jack. VBAT gives to charging IC, then DC to DC gives 4.2 or slow to backlight IC, and rectifier diode Mac 30 volt below to give 16 pin to display jack. Pulse width and modulation, win, voltage in CNTL controls, SWTH switching, feedback signal, pulse चौड़ाई मॉड्यूलर VIN and voltage in CNTL नियंत्रण, SWTH switching, feedback संकेत. This diagram show all of detail. Graphic IC VSP plus 5V and VSN 5V ग्राफिक IC से जैक तक सक्षम करें. CPU के लिए ग्राफिक IC, जैक प्रदर्शित करने के लिए टेट CPU, I2C SAA SCL ग्राफिक IC से CPU, जैक को प्रदर्शित करने के लिए MIPI DS 10 लाइन CPU. Out VSP 5 volt, VSN 5 volt, graphic IC to jack, enable 1, enable 2, graphic IC to CPU, TED CPU to display jack, I2C SAA SCL graphic IC to CPU, mini DS 10 line CPU to display jack. ग्राफिक आईसी के ग्राफिक आईसी चेक आउटपुट 2 पॉइंट VCN 5 वोल्ट और VCP 5 वोल्ट आउटपुट ठीक है तो ग्राफिक आईसी ठीक है. लाल नीले सफ़ेद स्क्रीन की समस्या ग्राफिक सेक्शन की समस्या है. पहले सेक्शन की जांच करें, फिर ग्राफिक आईसी 1 2 3 प्रक्रिया या CPU 1 2 3 प्रक्रिया. Checking graphic IC, check output of graphic IC 2 points VCN 5 volt and VCP 5 volt output is okay, then graphic IC is okay. Red, blue, white screen problem or graphic section problem. First check section, then graphic IC 123 processor or CPU 123 processor. What is the mic section? Mic section show in this diagram mic section. PMIC and mic bias and mic P and mic N. This is AUX and mic or in this and arrow side is subboard. Main
MIC. In this diagram is a speaker section, CPU speaker and enable PMIC, LOP and LON, VDD C1P and C1N, NP and NN and VOP and VON. PMIC control and send the NP and NN in main IC, and main IC is one ground, and the CPU speaker enable is the main IC, and output coil is input register is and VDD is up down. किसी भी स्पीकर की जांच करें, जीआर बोर्ड में दोनों पक्षों को जीआर देता है, यहाँ ठीक है। ऑडियो आईसी सी रिंगर आईसी एम्पलीफाई आईसी, अगर एसपीके कम आवाज़ दिखा रहा है तो एसपीके को चार्ज करें, या ये ऑडियो आईसी की समस्या है तो इसे बदल दें। पावर आईसी के साथ ऑडियो आईसी का कनेक्शन, अगर हम ऑडियो आईसी चार्ज करते हैं और समस्या हल नहीं होती है तो पावर आईसी के लिए 1 2 3 बात है। ऑडियो की बोर्ड समस्या में ऑडियो आईसी और पावर आईसी की चार्ज करें। Check any speaker GR gives both side GR in board, it's okay. Audio IC, ringer IC, amplify IC. If speaker showing low voice, then charge SKP, or this is audio IC problem, then charge it. Audio IC connection with a power IC. If we charge audio IC and problem is not solved, 1 2 3 to power IC. In board problem of audio, then charge audio IC and power IC. All of detail right now. ICS, posted IC, glue remove, and air you are keep air is 4 and hit the 240 and 245. IC remove air is 4 and hit is 360 to 370. For IC cleaning or removing pasted glue, air is 4 and heat is 240 to 255. Micro jumpering, UV glue past, UV light jumper, micro wire. Wi-Fi, Bluetooth, GPS section solution. Low signals, factory reset, software flash. Low signal, check series component if IC weak, low range problem IC 1 2 3. Wi-Fi BT, GPS IC as NAM. WCN news by 2 crystal if series components fail, network fail or low range pro. कम संकेत, नए यंत्र जैसी सेटिंग, सॉफ्टवेयर फ्लैग्स। कम संकेत श्रृंखला घटक की जांच करें, यदि आईसी कमजोर निम्न श्रेणी की समस्या आईसी 1 2 3 है। वाईफाई बेटी जीपीएस आईसी के नाम। WCN क्रिस्टल द्वारा समाचार, यदि श्रृंखला घटक विफल हो जाता है तो नेटवर्क विफल हो जाता है। या कम रेंज प्रो। इन दिस डायग्राम शो the control is a power IC. Power IC send detail the IC control, and control IC get the information in CPU. And Wi-Fi BT, this is a antenna is a Wi-Fi BT, and second antenna is a IC, and GPA WIR in this diagram. Pro,
Low network, no network का hardware issue. Proximity AIS sensor problem. Rubber removed from sensor, calling time not working and pocket mode switching. सेंसर कॉलिंग टाइम से रबर हटा दिया गया है जो काम नहीं कर रहा है और पॉक मोड स्विचिंग है. दिस इज द प्रॉब्लम है. सॉल्यूशन है क्लीन रिपेयर डाउनलोड प्ले स्टोर ऐप ऑफ दिस सेंसर एंड डिसेबल. यानी कि प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करो प्रॉब्लम इज डिसेबल करने के लिए. This is a PMIC. The diagram for a IC. The CPU get a feedback and get a SCL and SDA. And a VPH, PWR, VSN, VS, LEDA. And IC is a one ground signal, and in the middle side you will keep on a diode, resistor, capacitor and diode using and compass in MPS, east, west, north, south. CPU AMP sensor and PMIC, SDA, CL, RSTN. Hall sensor. They are sensor used for old screen touch mobile used to sell except using flip cover. Pro pocket mode proclating if sensor fail. यहाँ पुराने स्क्रीन टच मोबाइल के लिए सेंसर का उपयोग फ्लिप कवर का उपयोग करके कॉल स्वीकार करने के लिए उपयोग करता है. प्रो पॉकेट मोड प्रोक्लेटिंग अगर सेंसर विफल हो जाता है. 1 point. This is a Hall IC and control all of CPU. Hall IC lent in and all IC in this type of NC is not connected and one is the ground, and Hall IC get a enable signal in CPU and PMIC generate a 1.8 volt or PMIC in this middle side of a coil, both are coil, and Hall IC is the one side is NC and Hall interest is CPU. G plus O, GY res COP, accelerometer sensor using for a gaming and flip to screen. SCX and SDX, SSOX, SSCX, 1.8 volt PMIC, 2.8 volt IC, and one IC is in this side corner of a 5 number is one is ground signal, and 9 number is control and CPU, and SCX is a 14 and 13 between a line is control is CPU, and SDX and IC, and IC 10 and 11 one number pin is ground, and this diagram show using for a gaming and a flip to screen. Fingerprint sensor. This is a fingerprint sensor, and the one side is a PMIC 1.8 volt, and PAP connector is 2 pin is ground, and PAP connector 1 pin is FP interest and N, and RSTN, and MOSI is connect to CPU,
MISO is connect to CPU, and MIA and CS to connect to CPU, and SCK is connect to CPU. In this line more of diode available and put up. Board ID sensor used for checking original motherboard, used in service center. CPU board LDO 0.9 volt, board LDO 0.9 volt. CPU get enable in this 10K, 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 10K and 1.8 volt generate, and one pin is ground. Network section. And network section all of detail in this right now. WTR, HDR, IC, trans receiver, PPO, 2G and 3G IC, power filter, oscillator, 4G IC, RF IC, and WTR, HDR, IC, trans receiver, PPO, 2G and 3G IC, power filter, Tharnawala, 4G IC, RF IC. Note: two short to output given by charging IC to 4G IC and 2G 3G IC 3.7 volt, both are same nearby this IC. Capacitor are given, mostly these capacitor are short. IC को 4G IC और 2G को चार्ज करके दिखाए गए आउटपुट को छोटा करने के लिए 3G IC 3.7 वोल्ट दोनों समान है। इन IC के पास 1.1 कैपेसिटर ज़्यादातर दिए गए हैं। ये कैपेसिटर शॉर्ट है। डेट प्रॉब्लम एंड डेट सॉल्यूशन। वाटर डैमेज नोट इन मल्टीमीटर चेक। फुल शॉर्ट चेक ऑन डायोड मोड showing 00 if full short. Check on buzzer mode, beep sound on then full short. In this both are set on a multimeter and check on diode mode and a buzzer mode. Okay condition. So is 100 are above the 1000 on mode okay or more okay condition, and 250 to 600 okay, and 1000 above reading okay. Leakage and half short. First diode mode first to 1000 both reading showing when it's leakage. Diode mode 250 to 600 multimeter not showing 100% leakage DC machine, and machine 100% showing leakage. Water damage. Don't do direct service. Check all motherboard with ice scope any part most damaged click image. Don't paste use, not inner use, blur, hit, fold and air remove all pasted use soft brush. पानी की छती में सीधी सेवा ये in Hindi right now this. Charging IC DC to DC both line. Primary line the PMIC. Audio IC and graphic IC and 4G and 2G and 3G. BT Wi-Fi GPS and light IC. Sensor, camera, WTR, TP and CPU and EMIC. And the both line in this line connected is a 2 capacitor and charging section DC to DC is a generate PMIC, audio IC and graphic IC and 4G and 2G and BT Wi-Fi GPS and light IC control all of charging IC.
And PAIC control is the CPU and MME, and PMIC get all of connect secondary line is TP and WTR camera and sensor, and they show all of diagram detail using DC machine. OK condition, press power button showing ampere 0.65 to 750. OK condition, 1 ampere above fluctuates means up and down. If without trigger, without power on, showing on ampere and 0.000. Short condition, without trigger showing the 2 volt and 1.99. It's not OK, but showing and flatted machine voltage, then it's short. Leakage and half short, 1 to 1.999 ampere between any reading showing without on trigger, it means leakage. Software eMMC 300 ampere, so in low to eMMC problem eMMC software. Power, trigger after 0.90 to 0.300 showing after realizing the power button 0.00 means power IC problem, check coils. CPU, trigger after 0.10 and 0.20 and 0.30 and 0.90 after realizing power button showing 0.000, then CPU problem 1.28 CPU. eMMC, check captures nearby eMMC voltage on 1.8 and 1 their capacitor. CPU, system connected to mobile in add 1 point showing call come 9008 port, then CPU and power IC is OK. eMMC, कैपेसिटर के पास के eMMC चेक वोल्टेज को 1.8 पर और उनके कैपेसिटर पर चेक करें. CPU एड 1 पॉइंट में मोबाइल से कनेक्टेड सिस्टम कॉलकम 9008 पोर्ट पर CPU और पावर IC OK दिखा रहा है. And continue is a software. There are 2 types of files in Samsung flashing. All in flash files, 5 files package, files in 5 files package. In files is CAC and another was home CAC. Home CAC files we use flashing time data was not deleting but not confirm. It's Samsung is data we can't flash it, only flash on one phone in downloading mode. Use some key to international phone unlock of SIM or network. Software, सैमसंग फ्लैशिंग में 2 तरह की फाइलें होती हैं. सभी फ्लैश फाइल में 5 फाइलें पैकेज फाइल में 5 फाइलों का पैकेज CAC है और दूसरा होम CAC है. होम CAC फाइल हम फ्लैशिंग समस्या का उपयोग करते हैं. डेटा हटाया नहीं गया था लेकिन पुष्टि नहीं की गई थी. अगर सैमसंग यानी कि डेड हो गया हो तो हम इसे फ्लैश नहीं कर सकते, केवल फ़ोन पर फ्लैश कर सकते हैं. यानी कि उसकी बैटरी ख़राब हो गई है या पूरा ही ख़राब हो गया हो. डाउनलोडिंग मोड में सिम या नेटवर्क के अंतर्राष्ट्रीय फ़ोन अनलॉक करने के लिए कुछ कुंजी का प्रयोग करें. What is a UMTQC file? Read tool format PX execute click it show me special anti-relock reset MI account keep phone on no SIM no Wi-Fi connected setting is about phone on USB debugging tap on developer option cannot mobile on condition on USB debugging mode click anti-lock button. उपकरण प्रारूप PS निष्पादित करें. ओके ठीक है.
You write now in Hindi. MTK flashing. Use newly version to flash MTK processor mobile. If we use old after flash SP tools, choose download only download agent DA file, choose there. Shelter loading files, firmware the choose scatter file not. Unlike preloader file, if you choose wrong file to flash and come not and take a preludes file after flash chance to phone on. After flash problem. Hang on logo and DFL. On downside logo SOL, go to option button, select the download, choose lactic, USB checksum, storage checksum, then flash. Unlimited XUMT, MTKX, flasher load sector files, untick preloader file, then flash, MTK FRP and pattern unlock. Oppo meta mode in Oppo. Latest mobile files are signal files. Example POF files. You write now all of things and your requirement in this things in your repairing section. UMT Samsung. Error download error check OP and file. Pasted IC, removing side glue. This pasted IC in this air is 3 and 4, heat is 242 to 250. Removing IC air is 3 4, heat is 350 to 360. This is the fixing IC is air is 1 is 60 to 50 second and 350 to 360. Small IC, heat is 350 to 360, air is 3 and 4. Executing heat is 300 to 330. Air is 1. Note use big nozzle for big IC. Example eMMC CPU, use a small nozzle for small IC. UFI, deadboard repairs. ISP, ID system program, IG, G connector, data as ISP, this pin out, search model wise in Google. CMO clock, GND, VCQ, VCC. Note, search in Google mode, voice pin out. Note, if anytime not showing VCCQ, VCC pin outs, then use charging cables to provide voltage to motherboard. Backup. What is a backup? Click on program exit CD, CSD and user area and select in auto. Boot 1 click tick it, boot 2 click tick it, then check read after read. Boot 1 and boot 2, all files saved in PC. First step, user area part. Identify eMMC, then tick the all pick color files, then click to not do all this. Backup in UFI from eMMC, pin pattern PRD, MI account removing. User area special task, choose anyone, all FRP accounts, lock any remove. Universal problem, सार्वभौमिक समस्या, checking check the ID no, partition, configuration no, check, not okay. In Qualcomm, this message show phone okay, user area enable for best phone okay condition. In MTK, this message show phone okay, boot 1 is erase eMMC factory reset, erase eMMC. Then write the program. Check health condition eMMC, check this. Device lifetime normal, then okay. STC 10, the present is MLC 10%. If any charge not okay. 90% consumed problematic solution.
Then click in MMC the partitions, click GP1, GP2, GP3 and GP4. Tick all this, click partition setting, placing eMMC and click factory image, select drop program files and select path files and then write MMC. User area partition, select all pink files, the right some eMMC charge, only Samsung eMMC can charge. Software problems, hang on logo, booting and unknown baseband on. No IMEI, error message in Android, dead only welcome port, so MediaTek, Android Sport and Intel. How can we check a mobile is in hardware or software problem? हम कैसे जांच कर सकते हैं कि मोबाइल हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में समस्या है? Connect a mobile to PC, go to this PC and check, click on manage and go to device manager and go to device manager. If it show a mobile model, that is, if it show another device, think it is a hardware problem. All of detail right now in this section. Okay, thank you for watching, and all of detail you read it properly and use of your repairing section. Thanks for watching.